Good morning, students. Myself Deepak Kumar as a science faculty. Welcome to the online class which is provided by IITians Public School. Today we are going to start a topic which is left in the class, that is characteristic of wave. Characteristic of wave. In this topic we will define the four terms. First of all, wavelength. Second, amplitude. Third is frequency. And fourth, time period. These are the four terms we are going to teach about this: wavelength, second one amplitude, third frequency, and fourth time period. Now one by one we will discuss it. First, wavelength. We can define wavelength. It is the distance between two successive crests and two successive drop. Wavelength हमारा क्या है? तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ड्रॉप का बीच का क्या है? डिस्टेंस है. तो मैंने आपको क्लास में पहले ही बता चुका है क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है. मैं फिर से एक बार डायग्राम से समझाना चाहूँगा. मैं ग्राफ बनाता हूँ. By the help of graph, we can identify and simplify. This is the graph of sound wave. In this graph, we can indicate the terms wavelength. Here we can see the highest point, which is called crest, and this is the lowest point, which is drop. Once again, here crest, and this is drop. So simply we can say wavelength is the distance between two successive crests. Yeah, two successive drop. This is two successive crests. Here to here. This distance can be defined as wavelength, and simply wavelength can be indicated by the symbol lambda. We can indicate the symbol lambda. It is the symbol of wavelength, and SI unit of wavelength is meter, because it is the distance, and we all know that SI unit of distance is meter. तो आपको क्लियर होगा वेवलेंथ दो क्रिस्ट है ना, एक क्रिस्ट यहाँ बन रहा है और एक क्रिस्ट यहाँ है. इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम वेवलेंथ बोलेंगे, और इसका SI यूनिट क्या होगा? लैम्डा, है ना, which is denoted by the symbol this. Second one is amplitude. Second one is amplitude. Second one is amplitude. Second one is amplitude. In amplitude, we can say that maximum displacement of particles from their mean position. Once again, I want to repeat.
maximum displacement of particles from their mean position is called amplitude. In this graph we can see, suppose that this is the mean position, and from mean position the highest point is crest and the lowest point is drop. So we can say this is the maximum displacement of particles from the mean position. ये मीन पोजीशन से सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंचाई तक एक पॉइंट है, या फिर मीन पोजीशन से आप सबसे नीचे आ जाइए, ये आपका ट्रफ है और ऊपर क्या है, क्रेस्ट है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम एम्पलीट्यूड से डिनोट करेंगे। सो एम्पलीट्यूड वी कैन राइट हियर maximum displacement of particles, maximum displacement of particles from their mean position, is called amplitude. It is denoted by letter capital A. SI unit meter, because it is the distance and SI unit of distance is meter. Now next is third one is frequency. Frequency we can define number of oscillation per second, यानी एक सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन हो रहा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। वी कैन राइट नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, वी कैन राइट नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड frequency. It is denoted by letter F, यानी स्मॉल f से हम इसको दिखा सकते हैं SI unit of frequency is hertz. Symbol है ना, symbol we can write Hz. Next one is after frequency time period. We can discuss 4th point, time period. Time period is the time taken to complete one oscillation. एक ऑक्सीलेशन को पूरा करने में जितना जो समय लगा उसी को हम टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। It is denoted by letter T. SI unit is second. SI unit is second because we know that SI unit of time is second. So here SI unit of time period is also second. Now after that we can find the relation between frequency and time period. You have to remember, आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच एक रिलेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ। Here we can write frequency equal to
we can write in simple we can write f equal to 1 by t। ये आपको याद रखना है, यहाँ से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन t। सपोज दैट अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपका t दिया हुआ है 0.2 सेकेंड, तो आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड। You have to find frequency. So f is equal to 1 by t. We can write 1 by t 0.2 second. We remove decimal. We can write here 10 to 5. It means frequency is equal to 5 hertz. Clear? After that, one relationship you have to find between a speed, frequency, and wavelength. A speed, frequency, and wavelength, ये तीनों का बीच में रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है। और वो जो फार्मूला है v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, इससे भी आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपका हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन a speed, relation between a speed v, frequency f, and wavelength lambda। We all know that one formula between a speed, distance, and time. We all know that a speed equal to distance upon time। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाई क्या होता है टाइम। तो मैंने स्पीड को v से डिनोट किया और डिस्टेंस ये क्या है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ एक टाइप का डिस्टेंस है, तो मैंने इसको डिनोट किया लैम्डा। और ये जो नीचे टाइम है मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी। अब आपको एक फार्मूला मैंने जस्ट पीछे बताया f इक्वल टू 1 बाई टी। ये फार्मूला को याद रखना है। ये जो फार्मूला है दिस फार्मूला इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। f इक्वल टू 1 बाई टी। तो here we can put 1 by t, है ना? We can replace 1 by t and put f. So we can find v equal to lambda into f. V equal to f into lambda. You have to remember this formula. आपको ये फार्मूला याद रखनी है। v equal to f into lambda. v this is a speed of time, f this is frequency, and lambda this is the wavelength। आपको इस पर न्यूमेरिकल कभी-कभी आपको मिल जाएगा ना। सपोज दैट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, आपसे पूछेगा उस साउंड वेव का स्पीड क्या हो सकता है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक आपको न्यूमेरिकल से मैं बताता हूँ कि फार्मूला जो मैंने अभी बताया v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, इसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.6 किलोमीटर। तो मैंने कितना बार बताया है कभी भी न्यूमेरिकल बनाइए तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए। सबसे पहले आप गिवन लिखिए। क्वेश्चन है साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी, ये आपको f दिया है, f इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज। We can change 2 into kilo means 1000, so we can write 2000 hertz. This is your frequency, and wavelength is 40 centimeter, means lambda 40 centimeter, and lambda should be meter. So we can write here 40 by 100 means 0.4 meter.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर v, दिस इज अ स्पीड। तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी 2000 एंड लैम्डा 0.4, डेसिमल गया, एक जीरो कैंसिल, तो 4 इंटू 200, 800 meter per second. This is the speed of sound wave. Now we have to find how long will it take to travel 1.6 kilometer. 1.6 kilometer travel करने के लिए ये कितना स्पीड लेगा? तो we can find here time. You know distance by a speed. Distance by a speed. Distance 1.6 kilometer. We can change into meter, 1000, and a speed of 800, डेसिमल 101, 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और 8 से 2 बार पे कट जाएगा, यानी 2 सेकेंड। यानी आपको इस वेव को ट्रैवल करने के लिए 2 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है दोस्त, तो मैं अगली क्लास में इसमें जो बच गया उस पॉइंट को हम पूरा करेंगे। थैंक्स।